talked about aspect of our society, which is men's mental health. Whilst mental health is gaining popularity among the masses nowadays, it is quite unfortunate that the mental health of males is still largely ignored. Let's dive into the discussion of why this is the case and what can be done to address it. I would like to invite respected Dr. Mena to come up on stage and have a seat while I introduce her to all of you. Dr. Mena is a clinical psychologist who has done her master's degree from Karachi University. She has also done her master's in clinical community psychology from the California State University and went on further to get her PhD from the same university. She has gained a fellowship in public mental health from Johns Hopkins School of Public Health. Dr. Rubina is currently working as a research scientist in the Pakistan Institute of Living and Learning. Then, I'd like to ask Dr. Nasir Mahmood to come up on stage and grace the panel discussion with his presence. Dr. Nasir is a PhD fellow in clinical psychology, possessing a diploma in CBT along with a certification of psychiatric rehabilitation practitioner from the US. He is currently serving as a manager of research and development at Karwan Hayat Institute of Mental Health Care. Moreover, Dr. Nasir works as a consultant psychotherapist at the Yasin Psychiatric Hospital and the Soul Mind Hospital, along with being a research consultant at the Pakistan Institute of Living and Learning. Lastly, I'd like to introduce you all to the respected Dr. Kaisar Abbas, who isn't able to join us physically but has honored the discussion by joining in online. Dr. Kaisar has a PhD in clinical psychology. He is an assistant professor of clinical psychology, research manager of the social sciences ORIC, is an ETC-approved supervisor in the Department of Applied Psychology in the Government College University, Faisalabad. His expertise lies in consultancy in clinical psychology, student counseling and advising, addiction counseling, and family and marital counseling. Dr. Kaisar has been a practicing clinical psychologist for more than 12 years, has been teaching for more than 8 years, and has about 30 national as well as international publications, and has about 320 credit hours of national and international training. His major area of research resides in experimental studies, particularly randomized clinical trials. Now that I've introduced all our guests, let's begin this enlightening panel discussion. Assalamu alaikum, respected guests and audience. Today we are going to start a conversation on a topic which is hardly talked about. We generally talked about minorities like women and children, and their issues are highlighted. There is another gender who is generally projected as the perpetrator of the problem. Like women have issues, they suffer at the hands of men. Children are abused, pedophile, and they are mistreated and abused at the hands of men. It's not audible? Excuse me, girls. We need to attend this, please. It's not working. Ask them to keep it proper. On hai? Okay. So today we have decided to embark upon this topic that focus our conversation on the issues that is that true that men do not have any mental health issues, or they are okay with what they are now? So my first question
would be to Dr. Rubina. Madam, what would you say about it? Well, obviously, men are half of the human population. Can you all hear me? Am I audible? It's not working. It's not working. Should we try this? Can you hear me now? Okay. So the question was, do men have mental health problems? They're often portrayed as perpetrators of the problem. So number 8 to the perpetrators, yes, a lot of the times perpetrators of abuse tend to be men, but not all men are perpetrators. But absolutely men also tend to have mental health problems because they are human beings. All human beings, suffering is part of human life, and men also tend to have the ups and downs in their health and mental health. But in most societies, including Pakistan, men are not encouraged to express stress or express any kind of suffering. We may all agree that when little girls and boys are growing up, boys are given a certain message. What is that message? A certain message about whether or not they can share their emotions. Let me see if there's anyone here. So I know you're psychology? Yeah. Let's see if any of the audience, especially any of our male attendees, what message do boys get about whether or not they can share or express their emotions, particularly their sad or bad emotions? Okay. You boys are usually told men don't cry. That's a message that most men grow up with. It's true all over the world. It's more so in conservative society like ours. So men grow up with the message that sharing one's distress is weakness. It's not, but that's the message men tend to grow up with. And probably men, women, माएँ भी ये message reinforce करती हैं, बाप भी ये message reinforce करते हैं, छोटे छोटे बच्चों लड़कों से कहते हैं रो क्यों रहे हो लड़की हो. So ये distinction के it's okay for girls to express their feelings and distress is not okay if you're a man and if you're a boy. Men grow up with this understanding. So हमें research से पता है कि आम तौर पे generally men are not very likely to express stress, but men tend to have more stress-related disorders than women. अच्छा औरतों में रोना एक कमजोरी देखा जाता है, but actually expression of emotion makes women physically healthier. और those of you जो हमारे इस्लाम में हमें पता है हमारे prophet when he lost his third son he cried. And he didn't cry further because we are not supposed to mourn attachment, but he cried, meaning there's nothing wrong with showing feelings. So yes, men have problems, mental health problems, just as women do because they're beings. हम therapy में भी देखते हैं कि men are not likely to come to therapy, and if they do, interestingly, they are more likely to open up to female therapists than they do to male therapists. तो एक competition का भी sense होता है that a man is not going to acknowledge their distress to another man because the perception is कि as if they're sharing their stresses. I want to say also, जैसे कि हमने कहा कि मर्दों में stress related बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, औरतें जब depressed होती हैं तो withdraw करती हैं, cheerful होती हैं, मर्द जब depressed होते हैं तो वो angry हो जाते हैं. It's more acceptable for men to be angry and aggressive and hitting people than it is for them to be crying. So that's a little bit for now. Yes, it's through evolutionary process that they have learned to be aggressive and gain control of the natural resources to continue their survival. Yes, you are very much right in expressing these things. Now I will turn to Dr. Kaisar Abbas Sial. Dr. Saab, can you hear me? Yes, madam. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Dr. Kaisar, can you hear me? जी वालेकुम अस्सलाम. Yes, madam. सर आपने सुनी हमारी जो कन्वर्सेशन अभी हो रही है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हो रही है. तो मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि मेल क्लाइंट्स जो आपके नज़र में आते हैं, आपकी प्रैक्टिस में हैं, वो मोस्टली कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum to the dear faculty and the student and respected guest. Assalamu alaikum. मैंने जितना कुछ इस प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि जो मेल क्लाइंट जो है वो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं,
عام طور پہ 2-3 ایشو جو ہے نا وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کافی جو ہے نا وہ کامن ہے. ایک تو نو ڈاؤٹ کہ جو سیکشل ڈس آرڈرز ہیں اور اس کے ریلیٹڈ جو ایسوسیٹڈ پرابلم ہے وہ ایک فریکوینسی ہے پیشنٹ کی کہ جو آتے ہیں, لیکن عام طور پہ کیونکہ وہ کیسز مس گائیڈڈ ہوتے ہیں یا لوگ اسرٹیولی اس چیز کو اتنا رپورٹ نہیں کرتے, تو ایک تو یہ ایشوز جو ہے نا وہ بڑا کامن ہے, کیونکہ اس کی روٹ کاز کچھ اس طرح کی ہیں کہ ہمارے ہاں شاید اتنی اسپیس اویلیبل نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اس طرح اوپنلی ڈسکس کر سکیں, اور کچھ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اور ریلیجیس اسکالر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی اگر اس حوالے سے بات کر رہا ہے تو شاید وہ کوئی اچھی بات نہیں کر رہا, اور لوگ اس کو ایک اسٹگما بھی جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. ایک تو یعنی کہ یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر ریسنٹلی دیکھیں تو ہمارا خاص طور پہ جو میل اسٹوڈنٹ ہے وہ سوشل میڈیا ایڈکشن اور اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر ہے کہ سوشل میڈیا جب انٹرنیٹ اویلیبل ہے, باقی چیزیں جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں, تو دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ میں پچھلے 4-5 سال میں کنٹینیوسلی ایک سوشل میڈیا ایڈکشن اور مینٹل ہیلتھ پرابلم کی ایسوسیشن کے اوپر ایک کام کر رہا ہوں, تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ پرابلم ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فیمیل میں نہیں ہے, وہاں بھی ہے, یعنی کہ ٹک ٹاک ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ بھی ایڈکشن میں ان کی انوالومنٹ ہے, لیکن جو میل اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ ریشو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے, جس کی کچھ آؤٹ کم ہمیں یونیورسٹی میں ٹیچنگ کرتے ہوئے اپنے یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے اندر اس شکل میں نظر آتے ہیں کہ بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے لیتھارجک فیل کرتے ہیں, فٹیگ فیل کرتے ہیں, ایون کہ وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اوور آل بھی سنیریو ہمیں نظر آتا ہے, اور آج کل لوگ زیادہ دیر جو ہے نا وہ فون کا استعمال کرتے ہیں اور ایک اس کو لمٹ نہیں کرتے کہ دیکھ سکیں کہ اس کا مناسب جو استعمال ہے وہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایشوز جو ہیں وہ ایک کہہ لیں کہ ہارٹ ایشوز ہیں اس وقت, کہ سوشل میڈیا کو بھی اگر دیکھا جائے, باقی کیونکہ آج ہم مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ بھی جو ہے وہ ورک پلیس جو ہے نا اس کے ریفرنس سے ہے. تو ورک پلیس پہ بھی دیکھیں تو کچھ ایشوز جہاں فیمیل کی ہیں کہ ان کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, اسی جگہ پہ وہاں میل کو کچھ چیزیں جو ہیں اوور برڈن بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں کہ زیادہ یہی سمجھ کے پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یہ کوئی میں ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ان ایشوز میں سے ایک ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ایسے ایشوز سم ٹائم جو ہے نا وہ محسوس جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں اور ہو رہے ہیں. باقی کامن ایشوز بہت سارے اور ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی ڈیبیٹیبل ہے, اور ان کے اوپر ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اورینٹیشن جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر قیصر فار یور انڈکشن. اچھا, جیسا کہ ڈاکٹر قیصر آپ نے یہ کہا کہ موسٹلی میل دے رپورٹ سیکشول پرابلمس. I think they come up with this problem because the performance part of the sexual behavior rests with them. So in my recent experience I have observed one thing, that young men who recently get married, they come up with this kind of problem that since they have to perform, so they go through anxiety. So that anxiety exacerbates their performance. So how that their problem is perceived by their female counterpart or their family members. Sometimes they are stigmatized to the extent that they commit suicide, and they are marginalized by their friends when they are projected as a different from the rest of the men who are considered to be very strong. So Dr. Nasir, what would you say about it?
Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Khalda and SZABIST University to invite me. Especially जब मेल्स की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस की जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है. बहुत ज़्यादा जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है या जो है वो एडल्ट फेज में जा रहा होता है, तो उनको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती. और उस बेसिक इंफॉर्मेशन को जो हमारे कुछ जो है वो हमारे क्विक हैं वो गलत गाइड करते हैं. उसकी वजह से वो उसके एक थॉट प्रोसेस बन जाता है जो इनिशियल स्टेज से बनता है और मैरिड तक जो है वो जाता है. और मैरिड के वक्त भी जो कपल्स होते हैं यहाँ कपल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है. इसकी वजह से जो है वो बाद में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं और बहुत से फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. और उसको बेस बना के वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है. और हमारा क्योंकि कल्चर है कि हम लोग कहते हैं कि मेल तो जो है स्ट्रांग होता है और उसको जो है कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती. तो ये कल्चर भी जो है वो हमें मिस गाइड करता है. हमारे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो जब तक क्लियर नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं. Thank you, Dr. Nasir, for insightful answer. And I also think that कि अगर ये issues हैं तो mental health practitioners should also work on this issue कि sex education should be made a part of curriculum, because बहुत से issues हैं, even female sexual disorders भी ऐसे हैं जिसमें lack of education जो है that plays a pivotal role. तो there should be some step toward this. What would you say, Dr. Mena? Well, yes, I think overall well-being के हवाले से आप चाहे उसको कहें कि बचपन से बच्चियाँ या especially जब teenage में आते हैं, then young men and women have a sense of their bodies and what's natural. Similarly with emotions, what is it growing up, what is an appropriate way to express emotions. हमारे यहाँ जो मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट, फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी बहुत टाइटली इसको प्रिस्क्राइब करती है अब के ज़माने में, बिकॉज यंग लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है. उसकी फ्लिप साइड ये होती है कि बहुत दफ़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, कन्फ्यूजन भी होती है. सो अब जब एजुकेशन की बात करें, आई थिंक यंग लोग ये हमसे बेहतर आप बता सकेंगे. यंग लोगों को कुछ बताओ तो नहीं सुन, दैट्स नॉट देयर फिट. Right? But it's important to ask the young people, what is your experience? What do you think? अगर हम यहाँ कहें, students हैं, males हैं, females, सब साथ में आपस पढ़ते हैं. What is और topic है मर्दों की, लड़कों की ज़हनी सेहत, तो हम कहें कि what do you see? Do boys and men have problems of living? And how should they be discussed? उनके क्या issues हैं, उनके क्या solutions होना चाहिए? Who has the solution? इसे आपने substance use की पहले earlier presentations थी. लड़कों में भी शराब भरी है, लड़कियों में भी भरी है. Many reasons about that. Accessibility है, मगर young लोगों में isolation बहुत है, alienation बहुत है. जितनी digital communication है, उतनी ही actual social personal तन्हाई है. So we can't be the ones telling the young ones कि क्या solution, but we have to invite them to talk about it. What would be helpful for you and your friends. We have to invite the young people to be helpful and supportive to their colleagues. Be on the lookout. Can you tell when someone's really depressed? Can you tell when someone's thinking of taking their life? Can you tell when someone is so anxious that they stop being around family members? मेरे ख्याल से वो इलाज तो दूर की बात है, प्रिवेंशन का काम होता है कि पहले साइंस पहचानना, ये भी पहचानना कि stress is a normal part of life, distress is normal part of life, feeling anxious and depressed is a normal part of life, unless and until it becomes so consistent, so continual that you can no longer live your normal life. ठीक है, तो हम इसको broadly ही देखें कि जब खुदा न खास्ता कोई इस लम्हे में पे हो कि उनके मसाइल इतने हो गए कि वो ज़िंदगी जी नहीं पा रहे, and hopefully they understand that it's not only okay but it's important to get help. मगर उससे पहले prevention का काम जो universities और colleges में होना चाहिए कि having open dialogues about it.
Your ideas of this? जो बेसिक हमारा काम है उसमें ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए. अवेयरनेस के हवाले से हमें प्रिवेंशन बेस वर्क करना चाहिए. उसके लिए हमें कॉलेजेस पे इनिशियल लेवल पे, स्कूल लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि जहां हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस नहीं होती, बल्कि बाद रिसेंटली मैं एक चाइल्ड देख रहा था, ऑटिज्म चाइल्ड था, बॉय था, उसको 6 ईयर थी. उसके पेरेंट्स उसको कमरे में बंद करके जो वो रखा हुआ था उनको, और वो कहता है इसके इलाज की ज़रूरत ही नहीं है. उसको ऑटिस्टिक चाइल्ड को इलाज की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाता है, और वो उसको जो कुछ अर्से बाद जो वो ठीक हो जाएगा, उसको बड़ा होगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. तो ये अवेयरनेस कैंपेन हमें जो वो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन चलाएं. और सेकंड जो है वो ऐसी पॉलिसीज हम डेवलप करें जिससे जो वो हम प्रोटेक्शन की तरफ जाएं. तो ये बेसिकली जो काम करने का है हमारा. थैंक यू. अवेयरनेस इज बैडली नीडेड टू द एक्सटेंट कि हम समझते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड या लेसर एजुकेटेड लोग हैं उनको इंसाइट नहीं है. On the reverse side, I have observed one thing very striking. Recently, I had a client. She was a grade 21 professor in a very well-reputed university. She has a son, a very young, 10 to 12 years old. So that child exhibited few schizophrenic symptoms. A very, very prodromal phase was there. But she was not ready to carry out the therapeutic treatment for her, because I think she thinks that it will go away with the passage of time and he is very young. तो वो जब ग्रो करेगा तो उसके साथ उसके फिर वो प्रॉब्लम्स भी ग्रो करेंगे. और जब हमारी सोसाइटी में इतने क्वालिफाइड लोगों का अगर ये हाल है, तो हमारा तो वैसे ही लिटरेसी रेट इतना कम है. आप इमेजिन करें कितनी पैरामाउंट प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए. तो आपका क्या ख्याल है डॉक्टर कैसर कि इसके लिए हम एकेडेमिया के लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए? जी मैडम, आप बिल्कुल एक पॉइंट जो बता रही हैं, एक्चुअली एक चीज तो है कि हमारे यहाँ अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें तो जैसे सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आज देखें दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो लोगों की एक्सेस पे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हो या आउटसाइड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो. मेरा ख्याल है कि किसी जगह पे हम जितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमें अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप देखें कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे साइकोलॉजी भी मौजूद है, और हमें जो एक पूरी हमारी प्रोफेशनल की टास्क फोर्स है उसको एक यूनिफॉर्म मैसेज के साथ अपने स्टूडेंट को और इस मैसेज को प्रमोट करना चाहिए कि ये मेंटल हेल्थ स्टिग्मा जो है ये अभी भी हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाए. लोग चाहे एजुकेशन भी हो गई है, अवेयरनेस भी आ गई है. यानी मैं अपनी यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो हमारा कोई 80 डिपार्टमेंट में से कोई 50 डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी सब्जेक्ट एज अ माइनर पढ़ाया जाता है. नो डाउट कि उससे एक लोगों को अवेयरनेस और गाइडेंस मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इतने ओपन नहीं है कि वो कोई इस तरह की चीज जो है वो कर सके कि आके अपना स्टिग्मा रिड्यूस कर सके या बात बता सके. तो वे फॉरवर्ड ये है कि ये एक जैसे आज मेंटल हेल्थ डे है, ये हर साल मनाया जाता है और इस पे हम इकट्ठे भी होते हैं और डिबेट भी करते हैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए और जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं वो ऑन बोर्ड होने चाहिए
کہ اگر ہم ایک کوئی چھوٹے سے بروشر بھی اگر بنا لیتے ہیں نا تو میرا خیال ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ان کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ینگ سائیکالوجسٹ ہیں جو اس وقت اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں اور آئی ٹی میں اور اس طرح کی ٹیکنالوجی میں ایک اچھی اورینٹیشن رکھتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جہاں یہ باقی چیزوں کو اپنے یعنی کہ لائف میں پروموٹ کرتے ہیں وہاں پہ اگر یہ بھی کر لیں کہ میں نے روزانہ ایک اچھی پوسٹ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سٹگما کو یا مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی حد تک ہمیں ایک کامیابی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس وقت سوشل میڈیا ہمارے پاس یا انٹرنیٹ فیسلٹی کہ اس سے ہم جیسے اب پوری دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایسا یعنی کہ چینل بھی بنا سکتے ہیں جس کے اوپر وہ ڈفرینٹ ایکسپرٹ جو ہے نا وہ آ کے اس کی ایک اورینٹیشن جو ہے وہ دیں, یا وہ ایک اوپن چینل ہو کہ میں فارغ بیٹھا ہوں, دوسرا ہے اپنا ٹائم نکال کے اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا ویڈیو کلپ یا چھوٹی سی ٹاک, چھوٹا سا امپورٹنٹ ایشو جو ہے اس پہ اپلوڈ کر دے اور اس کو پھر جو ہمارے لوگ ہیں اسٹوڈنٹ ہیں یا جنرل باقی کمیونٹی ہے وہ اس کو ایکسیس کرے. تو یہ ایک اچھا ہو سکتا ہے. کیوں کہ اس وقت ایک آئی ٹی کا زمانہ ہے, ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں اب شاید فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے جتنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ سوچ کے اعتبار سے اور دماغ کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ پہلے کسی کو جا کے بتانا پڑتا تھا, اب یہ ہے آسانی کہ ہم اس کو دور بیٹھے بھی اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں اور اس کو پھیلا سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے ایسے وے فارورڈ ہیں. اگر ریاست اس چیز کو اپنی ایک ریسپانسبلٹی کے طور پہ لے کہ ہم نے لوگوں کو مورلی اور جو ہے نا ان کو ان کی مینٹل ویل بینگ کے حوالے سے ان کو پروموٹ کرنا ہے. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو پہلا ایک جو پیریڈ ہوتا تھا وہ ٹیٹوریل ہوتا تھا کہ جس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف حالات حاضرہ اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ بتاتا تھا, جس میں جنرل ڈسکشن ہوتی تھی, اخلاقیات مورل ویلیو کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی تھی, لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے کیریئر میں آگے جانے میں کس طرح یعنی کہ ایک تھاٹ پرووکنگ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. لیکن اب وقت کے ساتھ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب اسٹوڈنٹ بھی اگر یونیورسٹی میں آتا ہے تو وہ صرف دیکھتا ہے کہ 12 سے لے کے 2 بجے تک اگر میری کلاس ہے تو اس نے اپنا ٹائم اسی طریقے سے جو ہے وہ مینج کرنا ہے, کلاس میں آنا ہے اور چلے جانا ہے. جس میں میری آبزرویشن ہے, باقی لوگ بھی اس میں رائے دے سکتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بھی پہلے سے تھوڑا کمزور ہوا ہے. اب ٹیچر بھی لازم بات ہے اسٹوڈنٹ جب وہ اپنا انٹرسٹ یا انوالومنٹ یا پوچھ گچھ نہیں شو کرے گا تو ٹیچر کو بھی شاید تھوڑا لگتا ہے کہ بھئی اب میں بتاؤں تو شاید آج کل کافی ایزرٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس از نن آف یور بزنس, تو پھر ٹیچر بھی یہاں ڈس ریسپیکٹ فیل کرتا ہے. لیکن ایک تو یہ چیز ہے, اور باقی ہے کہ اس کے اوپر اگر ایک ریاست پالیسی بنائے کہ ہم مینٹل ہیلتھ سٹگما کو, اور پالیسی میں بڑے ساری چیزیں ہیں. ابھی تو ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں تو چلو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور باقی کچھ جگہ ایسی ہیں, باقی پاکستان میں جو ہے وہ بالکل چیزیں اس لیول پہ نہیں ہیں کہ اگر ایک پرسن جو مینٹل ہیلتھ پرابلم کا شکار ہو اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں ایک آئیڈیل لوکیشن پہ جا رہا ہوں کہ جہاں پہ مجھے ایک اچھا تھراپسٹ اور ایک اچھا پریکٹیشنر مل جائے جو مجھے گائیڈ کر سکے. تو ابھی تک ریسٹ آف دا جو کراچی ہے اس میں ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں ایسی فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے. اور اس میں اگر میں ایک اور بات کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوگی کہ رائٹ نو سائیکالوجی کی فیلڈ کو
इतना खतरा बाकी सब्जेक्ट से नहीं है जितने खतरात इस वक्त विदिन द साइकोलॉजी हैं कि हमारे स्टूडेंट एमफिल लेवल पे और बाकी जगहों पे यानी कि 1-2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग होती है, अदरवाइज बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि ट्रेनिंग नहीं है, डिग्रियां जो है वो दी जा रही हैं, लोग प्रैक्टिस को सीरियस नहीं लेते, अपनी मन मर्जी से क्लिनिक बनाए जा रहे हैं और जो है उस पे काम किए जा रहे हैं, कोई उनके SOPs नहीं, कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, कोई उसका यानी कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऊपर ऐसी बॉडी नहीं है जो उसको लुक आफ्टर कर सके। तो ये वजह है कि लोगों का बजाय एक जनरल कम्युनिटी का मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से अट्रैक्टिव होने की बजाय एक अवॉइडेंस जो है ना वो शो हो रही है। क्यों कि लोग जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो उसमें वो कॉम्पिटेंसी और वो प्रोफेशनल स्किल नहीं होती कि जो उसकी नीड को और उसकी जरूरत को जो है Yes, Dr. Kassar, you are right in saying that कि मशरूम ग्रूमिंग भी टू सम एक्सटेंट हो रही है कुछ प्रोग्राम्स की, बट आई एग्री विद ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल तो काम हो रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंटल हेल्थ के हवाले से। क्योंकि जो है जिस तरह पोलियो की कैंपेन्स पूरे मुल्क में चल रही होती हैं तो हम इस तरह कम्युनिटी के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से कम्युनिटी वर्कर्स को ट्रेन करके पूरे मुल्क को में इस कैंपेन को जो है वो बेहतर तौर पे लॉन्च कर सकते हैं। Yes, Sindh Mental Health Authority has launched a mental health helpline and many internees and grads are working there. तो मतलब कि थोड़ा slow pace है but steps are being taken. I welcome Dr. Haroon from the platform of SZABIST Psychology. Dr. Sir, we have been talking about men's mental health. So my question to you is that this is my recent observations that many young girls, young wives, they report that even though कि उनकी love marriage है, they report that their husbands are more engrossed in social media and engaged with some new partners. So why is that so? Why there is so lack of commitment of relationship कि love marriage भी हो रही है, एक दूसरे को पसंद भी किया है, शादी भी की है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियों को इतनी शिकायतें और ये बहुत कंसेंसस के साथ लड़कियों ने इस पे कहा कि नहीं मैम ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये कंप्लेंट ट्रू है। आप क्या कहते हैं? थैंक यू डॉक्टर खालदा, थैंक यू ज़ाबिस्ट। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट? आई वांट योर अटेंशन। सो क्वेश्चन बड़ा पर्टेनिंग है, चुपता हुआ क्वेश्चन है, ऐसे है कि नहीं? तो देखें अगर हर बंदा अपने आप में झांके तो मे बी ही विल गेट द आंसर। ठीक है, यहाँ असल में कितने प्यारा बंच हमारे पास इकट्ठा है साइकोलॉजी का, बात हो रही है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा है, यू नो इट्स अ बिट इंट्रिकेटेड इशू। देखो ताली डॉक्टर खालदा दो हाथों से बजती है, ठीक है? अगर तो इसमें मैं जेंडर बायस्ड या कोई ऐसे क्वेश्चन का आंसर उस तरह से नहीं देना चाहूँगा। ये इट्स टू वे प्रोसेस, राइट? और इसको मैं इस यंग जनरेशन को मैं इसका ब्लेम नहीं करूँगा, पहली बात, राइट? ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग, इट इज़ द ग्रूमिंग। अगर आज आपको हम अच्छा ग्रूम नहीं कर सके देन इट इज़ माई मिस्टेक, राइट? पेरेंटल मिस्टेक है। पेरेंट्स ने वो सीड, वो इंजेक्शन ही नहीं दिया, वो ग्रूम ही नहीं किया बच्चों को, ठीक है? हमारी जो अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड एज नाउ एंड नाउ वाली, जिसको हम कहते हैं, एंड दैट्स ऑल। नो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, उसमें कोई फारसाइटेडनेस नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है उसके अंदर सिर्फ जो ना वो क्या है, एक आई वॉशर या सुपरफिशियल अप्रोच है। सो वो जो देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं,
कल्टीवेशन से रिलेटेड हैं, राइट? आप जितना अच्छा कल्टीवेट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे. तो हमने इन बच्चों के ऊपर कुछ कल्टीवेट ही नहीं किया, राइट? ग्रूम ही नहीं किया आपको. आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए और दैट्स ऑल. उसके बाद आप जो मर्जी है करते फिरें. सो एक तो ये फैक्टर है, राइट? उसके अलावा देखें, आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पीपल आर मच कंसर्न्ड अबाउट द पैसा, मनी, राइट? आजकल मनी का इतना वो एक क्रेज है हर बंदे को कि जहाँ वो मनी का अट्रैक्शन देखते हैं दे टिल्ट टुवर्ड दैट थिंग. सो हमने अपने जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है उसको एक चीज़ समझानी है कि ये जो है ना बड़ा एक नेगेटिव ट्रेंड है कि पैसे से आप कहते हैं ना सारा कुछ तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या नहीं खरीद सकते बताएं? सेहत नहीं खरीद सकते. ठीक है, तो सेहत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि मैं चलता फिरता हूँ. मेंटल सेहत, मेंटल हेल्थ, रिलेशनल सेहत भी है, राइट? इसमें बहुत सारी सेहतें इन्वॉल्व हैं. सो आपने बड़ा लंबा लेक्चर सुना डॉक्टर कैसर का, मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं करूँगा. आई नो कि सारे लोग बोर हो रहे हैं. डॉक्टर खालदा, थैंक यू सो मच. अगला कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइएगा. थैंक यू. जी, आप लोग क्वेश्चन करें. आप व्हाट इज योर क्वेश्चंस प्लीज. The house is open for question and answer session. Anybody who has questions? अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद इस्माइल, MS साइकोलॉजी SZABIST स्टूडेंट. मेरा पैनलिस्ट से ये क्वेश्चन है कि क्या हम ये नहीं देख रहे कि स्टूडेंट्स में या हमारी कम्युनिटी में जो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है रेलेवेंट टू एटिकेट्स और या जो हमारे पेरेंट्स हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है साथ साथ ये सोशल मीडिया का, तो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इस क्वेश्चन के जवाब को कि हमारे अंदर सेंस ऑफ स्ट्रेंथ किस लेवल पे, लाइक पेरेंट्स हमारे अंदर सेंस ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू करें या हम इंस्टीट्यूशंस में लाइक पढ़ रहे हैं, मैट्रिक तक पढ़ा, देन हमने इंटरमीडिएट के लिए किसी एकेडमी या कॉलेज को ज्वाइन किया, ग्रेजुएशन की, स्टिल वी फील दैट कि हमारे अंदर जो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी नहीं है. तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? Ismail, thank you for that question. I'm not sure कि सेंस ऑफ स्ट्रेंथ से आपकी क्या मतलब है. मैं 2-3 मानों में ली जा सकती है. बस सबसे पहली चीज़ मेरे जहन में जा रही थी वो थी रिजिलियंस. तो साइकोलॉजी में जब रिजिलियंस की टर्म कहते हैं, ये वो स्ट्रेंथ होती है कि हर मुश्किल टाइम से बाउंस बैक कर लें. एक दूसरा सेंस होता है कॉन्फिडेंस के मानों में कि एम आई एबल टू डू एनीथिंग. एक तीसरा सेंस होता है सेंस ऑफ एफिकेसी, सेल्फ एजेंसी. क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ला सकती हूँ या मैं दूसरे ही ये मेरे लिए कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर आप कौन से वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे केयर टेकर्स, हमारे पेरेंट्स हमें ये सेंस पैदा करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी आर वर्थ एनीथिंग. जब बच्चों से पेरेंट्स जिस तरह प्यार करते हैं, बच्चे ये नेचुरली अच्छी पेरेंटिंग से दे गेट अ सेंस दैट आई एम रियली वर्थ समथिंग. और जो चीज़ें बच्चे करते हैं पेरेंट्स की तारीफ करते हैं, सो द पर्सन ग्रोज थिंकिंग आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, राइट. और अगर पेरेंट्स की ज़िंदगी में मुश्किलात हों, उनके अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज हों या उनके मुश्किलात हों फाइनेंशियल, वो अवेलेबल ना हो बच्चों के लिए इतना, वो ये ना कर पाएँ किसी वजह से, तो बच्चों में वो सेंस इसी तरह डेवलप नहीं हो पाती. पर व्हाट्स इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में कोई इंसान मिल जाए. फिर हमें रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें ये नहीं दे सके, तो उन बच्चों की ज़िंदगी में अगर कोई कोच था, कोई टीचर थी, कोई एक अडल्ट स्टेबल इंसान जो बच्चों को ये सेंस दिलाए दैट यू आर वर्थ समथिंग. एक तो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन घर से होती है. दूसरी इट सर्टनली मैटर्स, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, हमें समझ आती है, हमें इर्द गिर्द में माहौल देखते हैं तो हम सोसाइटी को देखते हैं. कैन वी ट्रस्ट आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस? एक सेंस वहाँ से आता है. डू वी ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन? डू वी ट्रस्ट आवर इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस? और तीसरी चीज़ नेशनल आइडेंटिटी.
एक वो स्ट्रेंथ होती है, आई बिलोंग टू, यू नो, यू फील स्ट्रॉन्ग सेइंग यू बिलोंग टू सर्टन कंट्री. सो आई एम नॉट श्योर आप जिसकी भी लेवल की आप बात कर रहे हो, लेकिन अहम चीज़ ये है कि एक सोचने वाले इंसान, मर्द या औरत, लड़का या लड़की के लिए, कि इंसान में ये कैपेसिटी है कि जो चीज़ आपको लगे आप में कम रह गई, दैट यू कैन ओवरकम इट. ये हमारी वायरिंग ऐसी की हुई अल्लाह ताला ने. वी आर वायर्ड दैट वे, बट वी हैव टू फाइंड द राइट रिसोर्सेज. अगर हम ये फील करें कि हमें वो सेंस नहीं है, जिस मानवी पे आप कह रहे हैं, वो रिजिलियंस हो, वो आइडेंटिटी हो, वो सेल्फ एजेंसी और सेल्फ एफिकेसी हो, जिसमें भी अपने आप को आप कमतर महसूस करें, हम जब तक बाहर देखते रहेंगे उन्होंने नहीं किया, वी विल ऑलवेज स्टे स्टक दैट. लेकिन जब हम अपनी ज़ात के अंदर देखेंगे कि मेरे अंदर अब क्या है कि मैं खुद उसको मेकअप कर सकूं, तो एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना आपके अंदर है. एक अच्छे काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि एक अच्छे काउंसलर, थेरेपिस्ट आपको अपनी उस स्पेस से कनेक्ट करा देते हैं. अगर ये नहीं हो रहा तो दैट काउंसलिंग इज नॉट गुड. लेकिन उसके लिए काउंसलिंग जरूरी नहीं है. इट कैन बी गुड फ्रेंड्स, इट कैन बी पीपल हु सपोर्ट यू, इट कैन बी योर फैकल्टी, इट कैन बी अदर पीपल इन योर लाइफ. बट इफ़ यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, तो आप ये ट्रस्ट कीजिए कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है. जो कुछ आप बनना चाहते हैं आप में वो कैपेसिटी है. अल्लाह ताला ने बनाया हमें ऐसे. Any other questions? My name is Alishba from BS Psychology. I actually have two questions. One of them is that imagine a kid who went through a lot of childhood trauma and they were not privileged enough to have the access to therapy. And they are aware that childhood trauma exists, it's in them. So what do you suggest? How do they get over? And another question is very general, that how do you know that your therapist is the best option that you've chosen? Your first question is again pertaining question. We don't have any remedy, we don't have any solution for that kid. Right, because if he is not approaching to somebody, some counselor or therapist, how we can approach to him or her, right? So डॉक्टर के पास अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो डॉक्टर आपका केयर नहीं करेगा, right? बेशक उसकी टांग टूटी या वो मेंटली या फिजिकली जिस तरीके से भी सिक हो, right? सेकंड क्वेश्चन बेटा, सॉरी आई एम ओल्ड मैन, दोबारा रिवाइज कर दो. How do you know that your therapist or counselor is the best option for you? Because a lot of people keep changing, or they don't resonate or connect with their therapist. So how do you know that it's the best option for you? Again, a tricky question. If you are, simple words, if you are satisfied with the therapist, if you think that you are improving day by day, then it means you are getting a good therapy. Your therapist fine, he is excellent therapist. And if you think so that he is weak in his therapy or a treatment is not working on you, then it's simply it's a saying na, action speaks louder than the words. So बहुत सिंपल सी बात है. Again, sometime ऐसा भी होता है, try to understand my question, because your question is very tricky. You know हमारा attrition rate कितना है? Almost 40 plus, right? आपसे 60% या 60% जो पेशेंट है वो आपसे मे बी ही विल गेट सेटिस्फाइड, राइट? ये इट इज़ नॉट विद द साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ विद एवरी मेडिकल प्रोफेशन. जितने भी डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर हैं उनका जो सक्सेसफुल रेट है वो 60 to 70% ही है. एंड इस बात को जहन में रखते हुए, बाय कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड, you can imagine what could be the repercussion and what could be the solution. Thank you. Hopefully I have satisfied you. Thank you. और एक सवाल का जो मैडम ने आंसर दिया, बेटा मैं इस जनरेशन, यू आर जी जनरेशन ना, isn't so? So जी जनरेशन ऐसी है ना, you having supremacy, you are intelligent people, you having a lot of good things in you, right? Your cognitive makeup, your intellectual aspects are too excellent than this generation which we are sitting over here. Again, you are too good with the mobiles, you are too good with the this cable and the laptops, right?
But again, once there is strength, there is a weakness. हम physiological way में maybe हम आपसे stronger हो, resilient हो, but कुछ way में you are more stronger than us. So this is the advancement or the revolution process to which we are passing through. और हर generation को has to pass through this era, and there are pros and cons. If you are asking that what strength you having a lot of strengths. But again, you are getting, very practical issues. For example, the madam asked me a question. Again, just imagine, मैं कोई आपको humiliate नहीं करना चाह रहा हूँ. Just take an example. ये मोबाइल की जगह मेरी बीवी होती है, तो मैं उसको कैसे रखता, ये बताएं ना अब आप, कि हर वक्त उसको चेंज, देखें ना उसका फेस चेंज हो सकता है. Always I'm keeping just scrolling in the screen. तो वो ये weakness है ना. So there are a lot of things. आप अपने आप को देखो, you are very confident, you are very expressive people. You don't have inhibitions. We people have inhibitions. We having blockages. We are unable to express our feelings not frequently as compared to you people. So you having a lot of things. But ये कि it is the gradual process. ये जो बात डॉक्टर कैसर कर रहे थे, मैं आपसे ना हम 24 years हो गए, हम दी कोलीग ऑफ डॉक्टर खालदा, राइट. ये तो मुझसे बहुत सीनियर है, तो लेकिन मेरी प्रैक्टिस में जो बात समझ में आई है ना, देखो साइकोलॉजिस्ट हम सारा गवर्नमेंट को कह रहे हैं गवर्नमेंट इज़ वीक, फलाना इज़ वीक. व्हाट वी आर, हम नालायक तरीन लोग हैं. मैं इन माई कैपेसिटी साइकोलॉजिस्ट आर वीकेस्ट पीपल, राइट. हम पढ़ते नहीं हैं. आप देखें ना, अभी भी आप जो ना बाहर चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में आप चले जाएं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, दे आर जस्ट गॉसिपिंग विद ईच अदर. आप मेडिकल स्टूडेंट देखें, वो बुक लेके पढ़ रहा होगा. ऑलवेज दे हैविंग अ बुक इन देयर हैंड्स. हम क्या कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग द टाइम. हम समझते हैं बस ठीक है, थेरेपी इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये 1-2 मिनट बस, ना मैं वंस आई विल गेट MS or BS, आई विल बिकम अ गुड थेरेपिस्ट. सर्जरी ऑफ थॉट्स इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. जो चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती है, द थिंग विच इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ ह्यूमन्स, इट इज़ इन इमेजिनेशन, राइट. उस डिसऑर्डर को ठीक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. है कि नहीं है बताओ. एक डिसऑर्डर, एक बंदा आपसे कहता है कि हैविंग हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स, मेरे पेट में जिन है, या मेरे साथ ये 4 बंदे और बैठे हुए हैं, तो सॉरी, तो आप क्या कहेंगे, कैसे उसको कन्विंस करोगे. तो आपको हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज चाहिए, राइट. आपको वो एक इंटरेस्ट चाहिए, आपको ट्रीटमेंट चाहिए. तो पेशेंट तो आपसे कहेगा कि मेरा जो थेरेपिस्ट है मुझसे सुपीरियर हो in every aspect, in character, in cognition, in association, in so many other things. इसी तरह से है कि नहीं है. So please do practice these things. Thank you. Okay, at the end, I would like to thank all of my esteemed panelists for sharing their insightful ideas with us. We really learned a lot of things that as Dr. Kaisar said, this is the age of social media. Through the use of social media, we can enhance awareness about mental illnesses. People will become alert if they feel or they observe any kind of symptom in them regarding mental illness. If we have frequent display of this information on the gadget which they generally use, so we can take advantage of the thing which is usually criticized. So I would like our esteemed Dean, Dr. Riaz Sheikh, to please come over stage and distribute souvenir among our guests. Okay, Dr. Kaisar, thank you for your presentation. Okay, Allah Hafiz. Thank you, madam. Thank you so much. Jazakallah.
I would like to thank our esteemed panelists for an insightful panel discussion on very critical topics that are often discussed, but then again in very hushed tones. Moving on, now we'll begin with the last session, which is the research paper session 2, and for which Dr. Haroon is already here on stage. I would also like to call Dr. Khalda to chair the session. The first research paper that we have is by Sabir Shahzad and Salman Shahzad from Institute of Clinical Psychology, University of Karachi. And the research topic is mediating role of aggression and substance use in the relationship between job satisfaction and well-being among personnel of higher education institutions of Pakistan. Mr. Sabir Shahzad, please I request you on the stage. पेपर प्रेजेंट करेंगे कल को कहाँ है इसको जी थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ साबिर शहजाद PhD research fellow from the Institute of Clinical Psychology University of Karachi Science and Technology. First of all, I would like to thank SZABIST for giving me the opportunity to discuss about important findings related to my study. The topic of my research study is mediating role of aggression and substance use in the relationship between job satisfaction and well-being among personnel working in higher education institutions of Pakistan. First of all, I would like to acknowledge Higher Education Commission of Pakistan, World Bank, who support background of my study and literature of my study. Drug use jeopardies in individual job prospects and lead to job dissatisfaction because of impaired performance. Job satisfaction is related to mental health, depression, social actions. Furthermore, researcher revealed the significant relationship of job satisfaction and low psychological well-being among employees. Objective of my study, present study aims to explore the mediation role of aggression and substance use on the association between job satisfaction and psychological well-being among personnel working in higher education institutions of Pakistan. Hypothesis, there are some hypotheses of my research. There would be a significant association between job satisfaction and psychological well-being
among personnel working in higher education institutions of Pakistan. The second hypothesis of my study is aggression and substance use would mediate the relationship between job satisfaction and well-being among personnel working in higher education institutions in Pakistan. Methods which we have used: sample 1230 personnel from higher education institutes of Pakistan using sample random technique, gender male and female, males 772 and females 450, age ranges 25 to 45 years, mean age 30.15 and standard deviation 6.87. Instruments which we have used for this study: personal information from job satisfaction survey, WHO 5 well-being index, aggression questionnaire, drug abuse screening test. Procedure: informed consent from eligible participant from all institutions and department, approved from the Departmental Ethical Review Board. Ethical consideration: respect the privacy, confidentiality and dignity of the participant. Here you can see in this slide the results of my study. Total effect of the mediation is significant. Direct effect of the variables is indirect, insignificant. Substance use and well-being, indirect relationship and direct relationship of the variables. Direct relationship is non-significant, and the indirect relationship, as you can see, job satisfaction, aggression and well-being. Discussion and conclusions: findings indicate the total model effect is significant. As I have discussed already in the previous some slides, the direct effect of job satisfaction on well-being is not significant. The total indirect effect is significant. The mediation pathway from job satisfaction where well-being, mediating effect of aggression is significant. The serial mediation effect from job satisfaction where aggression, substance use, well-being is significant. Conclusions of my study: it means the aggression has significant role in the relationship between job satisfaction and well-being, and design and implementing evidence-based prevention reduce the risk and aggression of much. Thank you so much, Mr. Sabir, for giving us insights on the role of aggression and substance use in relationship between job satisfaction and well-being. We truly appreciate your efforts. Now, the second research paper that we have is by Shiva Farhan, Manu Tahir, and Tuba Atif from Federal Urdu University and Comics College. I would like to request Manu Tahir to please come on the stage and present the research paper on dysmenorrhea, academic performance, and emotional regulation, a multifaceted intervention. Assalamu alaikum. This is Manu Tahir, and the study I am going to present is dysmenorrhea, emotional regulation, academic performance, a multifaceted intervention. So basically, हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि dysmenorrhea है क्या. So dysmenorrhea refers to a painful period cramps or a pelvic pain, severe pelvic pain that every woman face in the menstruation cycle or in the menstruation phase. So as हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत नोट की गई है कि हमारे यहाँ पे इमोशंस को सप्रेस किया जाता है, खासतौर पर जब बात आती है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर या फीमेल की इस फेज के ऊपर बात आती है तो हमारे यहाँ पे इमोशंस को
سپریس کیا جاتا ہے, ٹیبو کے طور پر لیا جاتا ہے کہ نہیں ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے بات, کیونکہ کلچر وائز اس کو ٹھیک نہیں مانا جاتا. سو بیسیکلی ڈسمینوریا جو ہماری پینفل پیریڈز ہیں اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ون از پرائمری ڈسمینوریا اینڈ دا سیکنڈ ون از سیکنڈری ڈسمینوریا. جو ہمارا پرائمری ڈسمینوریا ہے سو وہ وداؤٹ اینی میڈیکل کنڈیشن کے ہوتا ہے. لائک ایوری وومن جو ہوتی ہے ان کو یہ پینفل پیریڈز ہوتے ہیں لائک وداؤٹ اینی میڈیکل کنڈیشن سچ ایز ہارمونل ایشوز کی وجہ سے ہو جاتا ہے, یا یوٹرس کانٹریکشن کی وجہ سے جو پیریڈز میں پین ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے. پرائمری ڈسمینوریا از نارمل, بٹ دا سیکنڈری ڈسمینوریا از دیٹ کہ ود میڈیکل کنڈیشن جو پینفل پیریڈز ہوتے ہیں لائک جیسے اینڈومیٹریوسس ہو گئے, فیبرائڈز ہو گئے, یا پھر پیلوک انفیکشن ہو گیا, سو اس کی وجہ سے جو پینفل پیریڈز ہوتے ہیں سو وہ سیکنڈری ڈسمینوریا کہلاتا ہے. سو اکارڈنگ ٹو میری ریسرچز میم پی پی ٹیز ماہنور طاہر کے نام سے پی پی ٹیز ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں. تو ماہنور طاہر قیامت کی معنی کے نیچے. سو اکارڈنگ ٹو مینی ریسرچز جو ڈسمینوریا دیکھا گیا ہے وہ کامن ہوتا ہے ینگ وومنس کے اندر لائک 15 to 30 یا 15 to 35 ایج رینج جو ہے اس میں ڈسمینوریا بہت کامن دیکھا گیا ہے. 35 یا 30 کے بعد موسٹلی ڈسمینوریا نہیں دیکھا جاتا. وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری وومنس ہوتی ہیں وہ اس چیز کو لے کے ریزیلینٹ ہو جاتی ہیں, گو تھرو کرنا سیکھ جاتی ہیں وہ لوگ اس چیز سے کہ لائک آفٹر چائلڈ برتھ سو وہ یوز ٹو ہو جاتی ہیں اس پین کے. سو دیٹس وائی ان میں ڈسمینوریا نہیں دیکھا گیا. بٹ وہی بات ہے اگر ان کو کوئی فیبرائڈ ہو گیا یا کوئی ان کا پیلوک انفیکشن ہو گیا سو سیکنڈری ڈسمینوریا کوز ہو سکتا ہے ان کو. سو دا سیکنڈ ویریبل آف مائی ریسرچ از دا اکیڈمک پرفارمنس. سو اکیڈمک پرفارمنس دیکھی جاتی ہے اکیڈمک اچیومنٹس کے طور پہ یا ان کے گریڈس کے طور پہ, یا جو وہ نالج ہے اس نالج کو کیسے یوز کر رہے ہیں, اپنی کوگنیشن کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, وہ ہمارے اکیڈمک پرفارمنس کے اندر آ جاتا ہے. اینڈ دا تھرڈ ویریبل از ایموشنل ریگولیشن. So emotional regulation is that how a person manage their emotion, how a person regulate their emotions in a specific situation, in a different situation. So جو ہماری emotional regulation ہے اس کی 2 strategies, main 2 strategies ہیں according to Gross and Thomas. These are the cognitive reprisal and the expressive suppression. So the expressive suppression is that کہ جو ہمارے individuals ہوتے ہیں وہ اپنے emotions کو بہت suppress کرتے ہیں, وہ اتنا بتاتے نہیں ہیں اپنے ایموشنس کے بارے میں کہ وہ کس چیز سے گزر رہے ہیں, کیونکہ یہ چیز بہت کامن دیکھی گئی ہے. اینڈ دا ادر ون از کوگنیٹو ریپریزل. سو آپ کو اندازہ نام سے ہی ہو رہا ہوگا کہ کوگنیٹو کا مطلب آپ کی کوگنیشن انوالو ہوتی ہے اس میں, آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے. اگر آپ کسی ایموشن سے نکل جا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ایموشن کیوں فیس کر رہے ہیں. سو دا آبجیکٹیو آف مائی اسٹڈی از دیٹ کہ میں نے یہ دیکھنا چاہتے تھے ہم کہ جو ڈسمینوریا ہے اس کا اکیڈمک پرفارمنس پہ اور ایموشنل ریگولیشنس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سو ہم نے جب لٹریچر ریویو کیا تو ہمیں لٹریچر ریویو سے یہ اندازہ ہوا کہ جو اکیڈمک پرفارمنس ہے جو ہمارا ڈسمینوریا ہے اس پہ اکیڈمک پرفارمنس پہ ایسے امپیکٹ کرتا ہے کہ جو انڈیویجولس ہیں ان کی ایبسنٹزم ہونا شروع ہو جاتی ہے اسکول میں, لائک وہ اسکول سے آف کرنا شروع کر دیتی ہیں. یا دوسری چیز ہوتی ہے کنسنٹریشن لوز کر جاتے ہیں وہ لوگ اپنی, لائک اگر وہ لوگ اسکول میں ہیں یا کوئی کلاس لے رہے ہیں یا کالج میں ہیں تو وہ ہیڈ ڈاؤن کر جاتے ہیں یا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, ٹیچر کیا بول رہی ہیں وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اس چیز پہ. اینڈ دا تھرڈ از گریڈس امپیکٹڈ. جب وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنی اسٹڈیز کے اوپر تو وہ ان کے گریڈس بھی امپیکٹ کرتے ہیں اس پیریڈ میں. اینڈ سیکنڈ ویریبل از ایموشنل ریگولیشن. تو ایموشنل ریگولیشن سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ڈسمینوریا
زیادہ ہوتا ہے, جن فیمیلز میں ڈسمینوریا زیادہ ہے ان کی ایموشنل ریگولیشن خراب ہوتی ہے تھوڑی بہت, کہ وہ اپنے جو ایموشنز کو زیادہ سپریس کرتے ہیں, اتنا کھل کے نہیں بتاتے, تو اس وجہ سے ان کی ایموشنل ریگولیشن اسکلز جو ہیں وہ تھوڑی خراب ہو جاتی ہیں. The hypothesis of my research is that dysmenorrhea impact academic performance and emotional regulation. There will be a difference in pre and post intervention results, and there will exist between experimental and control group after intervention. So جو میری اسٹڈی ڈیزائن تھی وہ کوانٹیٹیو سروے تھا, اینڈ پارٹیسپینٹس جو تھیں وہ 220 فیمیلس تھیں, ایج رینج تھی 15 سے 13 کے درمیان میں, 30 کے درمیان میں, اور کراچی کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالج سے ہم نے فیمیلس لی تھیں. And the instrument was used was menstrual symptom questionnaire and the academic performance questionnaire and emotional regulation questionnaire. So جو کی فائنڈنگز آئی تھی, کی فائنڈنگز یہ تھی کہ ڈسمینوریا اور اکیڈمک پرفارمنس میں سگنیفیکنٹ نیگیٹو ریلیشن دیکھا گیا تھا, کہ اگر ڈسمینوریا زیادہ ہوگا تو اکیڈمک پرفارمنس کم ہوگی ان کی. اینڈ دا ادر ون از ایموشنل ریگولیشن. سو ایموشنل ریگولیشن میں یہ تھا کہ جو ہمارا سیکنڈ ایموشنل ریگولیشن تھا ایکسپریسو سپریشن, تو اس کے ساتھ نیگیٹو کو ریلیشن آیا تھا, بٹ کوگنیٹو ریپریزل کے ساتھ سگنیفیکنٹ ریلیشن نہیں آیا تھا. So after we have found these results, so we have decided to put interventions on it. ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ after interventions کے کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز پہ فیمیلس کے, کیا وہ اپنے اکیڈمک پرفارمنس کو ٹھیک کر پاتی ہیں اپنے انٹرونشنس کے بعد. سو جو ہمارے سیشن فوکس جو ہم نے سیشنز بنائے تھے انٹرونشن کے, وہ سی بی ٹی کے تھرو تھے, کہ سی بی ٹی کے جو پرنسپلز ہیں مین ہم نے ان کو یوز کیا تھا. اینڈ جو ہمارا سیشن فوکس تھا وہ پین مینجمنٹ, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, ایموشنل ریگولیشن اینڈ اکیڈمک پرفارمنس انہینسمنٹ کے اوپر تھا. ہم نے ان چیز کے اوپر فوکس کیا تھا اپنے سیشنز کے اندر. سو بیسیکلی ٹوٹل 8 سیشنز تھے. ان 8 سیشنز کے اپنے اسپیسیفک آبجیکٹیوز تھے, اسپیسیفک کنٹینٹ تھے, اسپیسیفک آؤٹ کمس تھے. ایکچولی ٹائم نہیں ہے, سو میں ان کے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا پاؤں گی. ڈیٹیل میں بتا دوں. جو ہمارا پہلا سیشن تھا دیٹ واز پین مینجمنٹ. سو اس میں ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ جو ڈسمینوریا لائک ان کو ریپو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے ان لوگوں کے ساتھ, کہ آپ تاکہ وہ ہم یہ بتا سکیں کہ ان کو کیا پرابلمس آ رہے ہیں, کیا پرابلم فیس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے کلچر میں اتنی اوپنلی بات نہیں ہو پاتی, لائک مدر اینڈ ڈاٹر کے درمیان میں اتنی اوپنلی یہ بات نہیں ہو پاتی ہے. سو ہم نے ریپو بلڈ کی تھی, ہم نے انفارمیشن گیدر کی تھی کہ کیا کیا پرابلمس ان کو فیس آتی ہیں, اینڈ دین ہم نے ان کی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی تھی. دین ہم نے ان کی اکیڈمک اچیومنٹس کی طرف ہم گئے تھے. ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, لائک لائف اسٹائل میں ان دا سینس کہ ہماری کیفین انٹیک, ہماری ڈائٹ, یا جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ وومنس کے اس میں اتنے ایکسرسائز کا نہیں ہوتا. لائک ہمارے یہ بولا جاتا ہے کہ ہم گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں, ہم برتن دھو رہے ہیں تو ہماری ایکسرسائز ہو گئی ہے, ایکسرسائز کو اتنی پریورٹی نہیں دی جاتی. سو ہم نے ان کو یہ چیز بتائی تھی کہ اگر آپ ایکسرسائز کریں گی یا آپ اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں گے تو آپ کو ڈسمینوریا جو ہائی پیک پہ ہے وہ تھوڑا نارمل پیک پہ آئے گا. دین از ایموشنل ریگولیشن. ہم نے ان کو کچھ ایموشنل ریگولیشن کی اسٹریٹجیز بتائی تھیں. ہم نے ان کو بتایا تھا کہ کچھ بیسک ایموشنز جو ہوتے ہیں, ہم نے ان کو ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایموشنز ہیں, آپ اپنی جرنلنگ کریں, آپ دیکھیں آپ کس ایموشنز سے گزر رہی ہیں, اینڈ آپ اس ایموشن کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں, آپ ہر چیز کی جرنلنگ کریں. اینڈ دین اکیڈمک پرفارمنس انہینسمنٹ جو تھا, اس میں ہم نے ان کو یہ اسٹریٹجیز بتائی تھیں کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ اگر آپ کو پیریڈ شروع ہونے والے ہیں, آپ کو یا آپ کی پین بہت شدید ہو رہا ہے, تو آپ اگر وہ 1 یا 2 دن کا گیپ لیتے ہیں تو نیکسٹ 2 days آپ اپنے کیسے گزاریں گے. تو ہم نے وہ جو 12 پارٹیسپینٹس تھے, ہم نے 12 پارٹیسپینٹس پہ یہ انٹرونشنز ایسے اپلائی کی تھی. سو آفٹر انٹرونشن جب انٹرونشنس کے رزلٹ ہم نے دیکھے تھے تو ہمیں سگنیفیکنس امپروومنٹ نظر آئی تھی, کہ ہم نے جب پری اینڈ پوسٹ انٹرونشنس کے رزلٹ ہم نے ٹی ٹیسٹ اپلائی کرا, سو ہمیں بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس نظر آیا کہ جو ہمارا ڈسمینوریا تھا اور ڈسمینوریا اکیڈمک پرفارمنس میں ہمیں اتنا خاص ریلیشن نہیں ملا تھا. جیسے یہاں پہ نیگیٹو کو ریلیشن آیا تھا, بٹ وہاں پہ ریلیشن نہیں آیا تھا. اٹس مین دیٹ کہ اگر ہم انٹرونشنز اپلائی اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور یا ہم لارجر ایریا پہ کرتے ہیں, تو اس چیز سے ہم جو ہماری وومنز ہیں ہم ریلیف دے سکتے ہیں اس چیز سے کہ وہ اپنے اکیڈمک پرفارمنس پہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں. دا ادر ون از کہ ایموشنل کوگنیٹو اپریزل پہ بھی چینجز آئی تھیں, کہ لائک انہوں نے اپنی جو کوگنیشن استعمال کرنا شروع کی تھی. لائک یہ جو پیریڈ ہوتا ہے, اس پیریڈ میں obvious سی بات ہے جب بہت پینفل ان کو پیریڈز ہوتے ہیں, جب بہت زیادہ پین ہوتا ہے,
सो हर इंसान अपनी एबिलिटी या अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर पाता. सो हमने जब इनके यहाँ पे इंटरवेंशंस अप्लाई करे, हमने उनको जर्नलिंग करना बताई, सो इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे. बट द जो हमारा एक्सप्रेसिव सप्रेशन था उस पर कोई चेंजेस नहीं आई थी. वो इस वजह से नहीं आई थी कि मैंने बताया कि हमारे कल्चर में इतना नहीं है कि हम ओपनली, जैसे अभी पैनल डिस्कशन में भी ये बात हो रही थी कि हम अपने इमोशंस को या हम जो फील कर रहे हैं वो हम बता देते हैं. बट ये लोअर मिडिल में या मिडिल क्लास में इतना आम नहीं हुआ है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने इमोशंस या खास तौर पर ऐसा टॉपिक जो हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते या बहुत टैबू समझा जाता है. या अभी थोड़ी देर पहले एक हमारी स्टडी प्रेजेंट हुई थी जिसमें मीडिया का बताया गया था कि उसमें कुछ रेशो बताया था कि वो बोलते हैं कि हमने स्किप कर दें, हमने देखना ही नहीं है. तो ये चीज़ बहुत देखी गई थी. सो इस वजह से जो वुमेन्स हैं फिर उनको यही इंसाइट आ रही होती है कि नहीं, हमें डिस्कस नहीं करनी इस चीज़ को. सो इस वजह से एक्सप्रेशन सप्रेशन के ऊपर हमें चेंजेस कोई नज़र नहीं आते आफ्टर इंटरवेंशन. सो कंक्लूजन ये है कि जब डिस्मेनोरिया इम्पैक्ट करता है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, इमोशनल रेगुलेशन पे, और अगर हम इंटरवेंशंस अप्लाई करें, लाइक हम अवेयरनेस फैलाएं या हम सेशंस करें विद वुमेन या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में अगर हम लोग इंटरवेंशन अप्लाई करें, उनको जाके बताएं, उनको इंटरवेंशन सिखाएं कि आप ये सब कर सकते हैं, आपकी डाइट ऐसे कंट्रोल हो सकती है. सो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. या जो वुमेन्स हैं जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्पेक्ट कर रही है, सो इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है. थैंक यू. Thank you so much, Manu. We appreciate your efforts and your research on dysmenorrhea, academic performance and emotional regulation gave us really good insights. Now, moving on to the third research paper we have from University of Karachi, Ms. Asma Latif, who will be presenting online. Her research focuses on social and cultural attitudes towards appearances. Dr. Asma, can you hear us? Yes. Can you hear me? Yes, we can. Please start. I'm presenting over here is a social and cultural attitude towards appearance. Miss, Dr. Asma, can you please disconnect from one of your IDs? There are 2 profiles that have joined the link. If you could just join from one of your profiles, please. There are certain social stereotypes related to appearance. Dr. Asma, I'm really sorry we cannot understand you because there are 2 profiles that you've joined in from. Okay, yes. Yes, Dr. Asma, you can start now. The topic of my research was the social and the cultural attitude towards appearance. This is abstract. The social stereotypes related to appearance have changed over time, and now appearance is a criteria of personality assessment in our society. We judge people usually on the basis of the appearance they have, which increase concern of the individuals. They show so much concerns about their appearance just because of the social standards and the demand. And because of the social standards laid down by society through various means, body dissatisfaction is increasing in both males and females. And males are striving for muscular body, whereas female wants to have a thin and lean body. So these are the criteria which we have set socially for male and female. With this, the rationale of study is to consider the fact that only few researches have so far been conducted in Pakistan with respect to eating behavior and conducted in Pakistan to see the gender difference based on social cultural attitude towards appearance. Because most of the people think that there is only female who are suffering from the social pressures to look good, look beautiful. They are the ones who are suffering from the body issues and eating behavioral issues. Whereas the theoretical foundation of the study is concerned, various worldwide research is evident that males are facing body-related dissatisfaction equally as female because of the social standards and cultural attitudes. There are only few researches about the role of social influence in development of
appearance-related issues so far conducted in Pakistan. In Pakistan, in one of the study conducted in 2008, that too on medical students, so that the criteria and the sample was very limited, showed that majority of the students are somehow dissatisfied with their physical appearance and their body and their appearance. So with this all, the aim of the research paper was to study was to find out the gender difference with reference to social and cultural attitude towards appearance among young adults. There were 5 hypotheses in total. First one was there will be a gender difference in internalization, thin, low body fat. And the second one is there will be a gender difference in internalization, muscular and athletic. And the third one is there will be a gender difference in family pressure. There will be a gender difference in peer pressure. And the last one is there will be a gender difference in media pressure. Before starting the further, I just want to define the terms which I am using in my research paper. These are the operational definitions. First of all, the internalization or thin low body fat. So it means the internal thought and the feeling of an individual to have lean and slim body with less body fat. And internalization, muscular athletic means inner desire of an individual to have athletic and athletic-like body with minimum or low fat. So these 2 are the internalization factors, and 3 are the external factors. But first external factor is the external peer pressure. It is the way individuals feel pressurized by the peer to achieve socially acceptable appearance. And the external pressure, which is the family pressure, pressure from the family to improve physical appearance and have ideal body. The last external pressure is the media pressure. It is the way we perceive pressure from various means of media to improve our looks. The methodology which I used in my paper is the research design. It's a cross-sectional comparative study, and the sampling technique which I used is the convenient sampling. Sample size was of 5 or 9 students, out of which 253 were male and 256 were female participants of age 18 to 25 years of age. Inclusion is the university students. They all are the university students, and exclusion criteria is they must have don't have any mental or physical disability, because people with mental or physical disability have comparatively a lower self-image, or they have more physical appearance related issues as compared to those who don't have any. And then measures, we use socio-cultural attitude towards appearance for scale, that is SATAQ. It was developed by Thompson et al. In 2015. This scale has 32 self-reported items and 5 sub-scales. 2 internal scales, 10 low body fat and muscular athletic, which I have already discussed and or elaborated in the operational definition, and 3 external scales which are peer pressure, family pressure, and the media pressure. And all these I have already discussed it again in the definition. And the ethical consideration which we consider while conducting this research is the voluntary participation. They all were voluntary, and the informed consents were taken from them. As far as the result is concerned, independent t-test was used for the data analysis. Results indicate that male participants scored significantly higher than female participants on internalization muscular athletic subscale, which is obvious with the main or with the factor subscale muscular athletic, because males want to have a muscular athletic body as compared to female. They are more enthusiastic to get that. Whereas female participants score slightly higher internalization than low body fat scale. Slightly higher just because male participants also want to get the low body fat. They want more muscles, but with low body fat. The second important result is male participants had significantly higher scores on all 3 external subscales, that is either peer pressure, family pressure, or the media pressure, as compared to female participants. Means male participants are feeling more pressures from their peers of family or media to look good, to improve their physical appearance and change their body physique. So overall, this study will highlights that gender difference exists with reference to social and cultural attitude towards appearance of an individual. It is important to design gender-sensitive interventions to create awareness with reference to various social and cultural factors related to appearance. That's all from my side. Thank you so much.
Thank you so much, Dr. on the stage and present a research paper. Assalamu alaikum. This is Hafsa Riaz here, a clinical psychologist at ANF Anti-Narcotics Force, MTRC. So as we have discussed earlier, two populations regarding female substance abuse and adolescent substance abuse. Now we will discuss about adults, male using substance abuse. So the topic of our today's presentation is patterns and trends among male adults using substance use and focusing on their demographic variables. Firstly, let's talk about what a substance abuse is. It's basically that mental condition which affects person's brain as well as its behavior. It's basically, they hijacks their brain reward system and they continue using it without realizing the consequences that they are facing. If we talk further about it, so the data was collected from the last 3 months, like June, July, and August 2024, from MTRC to look at the patterns and demographic variables about the substance use. If you look at the introduction and rationale, so it shows that it not only impairs their behavior and physical well-being, but their academic well-being, their social, spiritual, every area of life is impacted because of using these type of drugs. If you look at the theoretical foundation, so there are 3 theories which explain about these things. Number 1 is the biological, social, and psychological theory, which explain that there is a systematic, complex phenomena of their using these drugs, because uske अंदर हमारे पास just एक वेरिएबल नहीं है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स होते हैं. अब सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे देयर इज अ पीयर प्रेशर होता है हमारे पास, सोसाइटल इन्फ्लुएंस होता है, ये सारे एरियाज उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. व्हाट अबाउट द कॉग्निटिव फैक्टर? कॉग्निटिव फैक्टर ये कि उनकी अपनी कोपिंग मैकेनिज्म्स, जैसे अभी डिस्कशन हुई थी कि मैन की मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि उनके जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, दे बेसिकली कैन नॉट डील विद इट, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और या तो वो एंगर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, और दे यूजेस ड्रग्स टू डील विद दैट इशू. So there were 2 objectives, basically to focus on their demographic variables and characteristics, like drug किस form में ली जाती है, their mode of administration, their frequency of use, and their expenditures on that drug involved. So basically जो हमारा data का sample था, that was 280 participants थे हमारे पास, and this data was collected from male participants only. So if we look at the summary of the results, so it mentioned कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है हमारे पास, उनके जो यूज़ है वो क्रिस्टल और हीरोइन ज़्यादा है. अगर हम बात करें उसको जो लोकल नेम्स कहा जाता है, सो हीरोइन को एज ए पाउडर कहा जाता है और क्रिस्टल को क्रिश कहा जाता है, जो कि अब हम बेसिकली जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कैनबिस और लो काइंड ऑफ ड्रग, लेकिन जब जहाँ पे वो एंड करते हैं आके क्रिस्टल और हीरोइन या उस तरह की पावरफुल ड्रग्स पे, विच आर हाईली एडिक्टिव. इनिशियली जो स्टार्ट या यूज करती है आजकल जो हमें नज़र आ रहा है, वो वेप की फॉर्म में है, वो सिगरेट की फॉर्म में, एंड दे कंसिडर कि जो सिगरेट है या जो वेप है वो बेसिकली एक ऑल्टरनेट है सिगरेट के लिए, बट इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर सिगरेट, इट्स फार मोर डेंजरस देन सिगरेट. सो अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे या कोई भी यूथ जो स्टार्ट करेगी वेप, इस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट करें कि यू विल एंड अप फॉर्मिंग दीज और डेवलपिंग दीज काइंड्स ऑफ ड्रग्स, कि आपको आगे जाके वो चीज़ें अगर उससे सूथनिंग ना मिली, उससे आप ना हल कर सके अपने प्रॉब्लम्स, तो कैसे करेंगे, फिर आपको हायर डोज लेना पड़ेगा और यू विल गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि ज़्यादा आपको अच्छा फील करवाएं.
उसके अलावा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ थी उसका 1 डोज ही इतना इनफ होता है, लेकिन वो 3 to 4 टाइम्स अ डे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. मीन्स कि वो अपनी सारी जो फंक्शनिंग होती है उसको छोड़ के दे जस्ट फोकस कि मुझे ड्रग्स लेने सुबह भी, दोपहर, शाम, रात, जस्ट लाइक डेली डोज ऑफ मेडिसिन होता है. ये डेली डोज ऑफ मेडिसिन उनके लिए वर्क कर रही होती है कि मुझे 3 to 4 टाइम्स लेनी है. इसके अलावा जो ड्यूरेशन हमारे पास जिस तरह आते हैं तो सिर्फ वो 1-2 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते वो ड्रग्स, वो 1, 2, 3, 4, 5 इवन 10 साल से ये सारे ड्रग्स इस्तेमाल करके देन जब उनकी सारी कोपिंग मैकेनिज्म्स खत्म हो जाती हैं, उनका सारा फिजिकल, साइकोलॉजिकल एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड, तो दे आर बैक कि आप मुझे ठीक करें. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है फिर ठीक करना, क्योंकि आप 10 साल से एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी इतना ख़राब कर चुकी है. और उनकी जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे हमारे पास ज़्यादातर लोअर क्लास होती है, उनकी जो फैमिली इनकम होती है मंथली वो 20 to 30,000 है. एंड एवरी डे दे आर स्पेंडिंग ऑन इट 100 to 1,000. वो नशे पे लग रहे हैं, मिनिमम 1,000 है, वो एक्सीड होता है क्योंकि जो ड्रग वो इस्तेमाल कर रहे हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव, स्पेशली क्रिस्टल और हेरोइन और इस तरह की ड्रग्स. So this was basically a summary. If you want, so I can elaborate all the results one by one. Okay. So हमारे पास जो एज रेंज थी, एज रेंज हमारे पास जो अडल्ट की थी वो हमारे पास थी 20 से लेकर 60 तक. तो मेजॉरिटी जो फॉल करी थी तो वो 20 to 35 के पास ज़्यादातर हमारे पास पॉपुलेशन थी. उसके अलावा एज यू कैन सी कि ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड प्राइमरी मिडिल में फॉल करते हैं, बट इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है. हमारे पास ग्रेजुएट लोग भी आते हैं, हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो यही सारी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड दे कैन नॉट कोप विद इट. And then we can see the marital status, mostly either they are single or they are married, having such issues. तो ये वही वाली बात है कि जो सिंगल है वो भी खुश नहीं है, शादीशुदा वाले भी खुश नहीं है, तो फिर खुश है कौन? खुश वो है जिसका हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है और जो एक्सप्रेस कर सकता है अपने इमोशंस बेसिकली. ओके, सो जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन में हमारे पास क्या ज़्यादातर लेबर्स आ रहे होते हैं और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं. इवन दे आर मोर शार्प और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट उनको अपनी कैपेबिलिटीज एज सच अभी तक उन्होंने फाइंड ही नहीं की होती. सो दे इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स. क्रिस्टल एंड हीरोइन ऑलरेडी डिस्कस्ड. उसके अलावा हमारे पास इंजेक्टिंग से ज़्यादा ड्रग यूजर्स जो होते हैं, नॉन इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स होते हैं, वो ज़्यादा एडमिट होने के लिए आते हैं. फ्रीक्वेंसी, या 1 to 10 डिस्कस, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज डिस्कस्ड. ओके, लेट्स डिस्कस टेबल नंबर 11. जैसे आप लोग टेबल 11 में देख सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कैनबिस से, एंड देन अल्कोहल, एंड देन इट एंड्स ऑन ओपियोइड्स, दैट इज हीरोइन वगैरह पर वो एंड करते हैं. सेकेंड ग्राफ में शोज के कैनबिस, अल्कोहल एंड मैथ. उसके बाद है बाकी जो कैटेगरीज है उसकी बहुत लो हमारे पास जो डेटा है, विच शोज के स्टार्ट तो हम कैनबिस से कर लेते हैं, स्टार्ट हम कर लेंगे वेब से, बहुत छोटी सी चीज़ों से, और हमारी थिंकिंग क्या होती है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, मैं कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर रहा है. सो हाउ विल यू कंट्रोल इट? यू कैन नॉट कंट्रोल इट. आपको फिर कोई और अल्टरनेट ड्रग चाहिए होगी, कोई और हायर डोज चाहिए होगा, एंड देन यू एंड अप इन दैट थिंग. एंड द स्पेंडिंग इज मोस्टली 600 to 1,000 डेली बेसिस, ऑन द डेली बेसिस. Socioeconomic status, as mentioned earlier, they are mostly lower class and their family income is mostly 20, 30s or 40s. और आजकल जिस तरह की महंगाई है उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा, और ये 1,000, 2,000, 3,000 आराम से ड्रग्स पे लगा रहे हैं. अगर हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं? बहुत सारी डिस्कशन हो गई कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्क करे, पेरेंट्स वर्क करें. हम हमेशा ब्लेम दूसरों को क्यों करते हैं कि वो करें? हमने कभी अपने आप को नहीं देखा कि हमें क्या करना चाहिए. तो अब सवाल ये नहीं है कि मैन की मेंटल हेल्थ या फीमेल की मेंटल हेल्थ, सवाल ये है कि हमारे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, हमारे अपने थॉट प्रोसेस कैसे, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ या कैसे डील करता हूँ. क्योंकि लेक्चर्स तो हर कोई दे देगा कि समझा के चला जाएगा, हम एंड में क्या करते हैं ये मैटर करता है. तो आपको अपने लेवल पे काम करना चाहिए. अपने लेवल पे अगर आपको लगता है कि इश्यूज हैं, डील करने चाहिए रादर देन इन्वॉल्विंग इन दीज टाइप ऑफ थिंग्स. एंड ऑफ कोर्स अवेयरनेस सेशंस, इंटरवेंशंस प्लान्स, रिस्क फैक्टर्स फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है बिकॉज ड्रग इज नॉट इटसेल्फ इशू, द रिस्क फैक्टर इज समथिंग एल्स, जिसकी वजह से, बिकॉज ड्रग इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म. यू आर यूजिंग इट जस्ट बिकॉज यू हैव सर्टेन
problems, right? Ethical considerations, same, privacy was maintained, confidentiality, and it was IRB approved, International Review Board basically approved this research, and that board is of MATRC, Anti-Narcotics Force. Yeah, so that's all from my side. Thank you. Thank you so much, Hafsa. We truly appreciate and value your efforts. Now, before we end the ceremony, I would like our session chairs to please give their closing remarks. Okay. The first paper was by Mr. SZABIST. It was about job satisfaction, aggression, and substance use. The topic was very timely, and some interventions are badly needed for substance use in workplace. It's highly impacting our workforce. And of course, behavioral issues like aggressions are also there. The next paper was about how the conditions, yani ki dysmenorrhea, this condition affect the emotional, physical, and intellectual performance of females. Very critical interventions were used with the sample, and their consequences were also discussed. The third paper was about the physical appearance concerns among young girls and boys. So these are so pressing needs on young people that they become victim to eating disorders, or boys start using protein drinks to become muscular and very impressive. So they take a lot of toll to make this appearance. So it's a big issue among young generation. And the last paper was about the ratios related to substance use. And these were really very alarming. Actually, whatever educational campaign is needed regarding the use of substance, these education should be coming from expertise, because if those people have been so good at solving their problem, or if they have been so proactive, they might not have fallen victim to substance use. So we can see that mental health is a big economic burden, and steps should be taken, and it should be done on individual level rather than waiting for big organizations to take steps. We should look around. Do we have people who are ignored in some respects, or do they behave in a slightly different ways from their usual life? We should address them, embrace them, and talk to them. You see, communication is the key to lots of problems. It may solve relationship issues. It may allow you take the emotional toll from your head, and so many things could be solved through communication. तो बात करें, खामोश नहीं हो जाए, नाराज नहीं हुए, बात करें, एक्सप्लोर करें कि क्या बुरा लगा है, क्या उदासी है, क्या मसला है. Talk to each other. ठीक, लेकिन जब सुनने का टाइम हो तो सुने भी. Thank you for your patience. Dr. Harun, would you like to give any remarks? Thank you so much, Dr. Khalda and SZABIST again. Very powerful research papers. Definitely, it is the need of the time, especially the papers which are especially related to the drugs, because the drug is on the hype at this moment, and the crystal and the ice is one of the most deadliest drugs which are very much common in youngster. So I must say I appreciate the papers which are addressing the drugs and the interventions. Again, Manur has also presented a very significant research regarding to the awareness related to the specific issues which is very much common in ladies, but again due to the cultural limitations and some other reasons,
because Karachi is, I hope so, Karachi is, it's a metropolitan city, and people are very much vocal and expressive, but all over the Pakistan, this problem has need much of the stress, but unfortunately, people don't talk about this major issue because our major population, 52% population is female. Isn't so, na? So we are not addressing this issue. So young generation, it is almost more than 70% of the total population. So again, it's a very important issue. And Asma has also presented again a very pertaining issue, which is the physiological or physical appearance issues in male and female. Much of the industry, makeup industry, using or spending billions of rupees on this appearance and the makeup. So again, it's a wonderful paper. Thank you so much, our researcher, and keep doing this important researches, because these are the realities and the actual papers. And please, मैं आप सारों से ये कहूँगा, जितने बच्चे हैं, ये जो superficial paper है ना, इनको avoid करो. पहले data ले लो, उसके बाद जो ना वो चीज़ें करो, and play your significant role in the importance and in the elevation of psychology, because यही हमारे में कमी है, which is the time needed. Thank you so much. I have taken a lot of your time. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Haroon and Dr. Khalda, for your insightful remarks. As we come to the end of this incredible conference, I want to take a moment to reflect on the meaningful conversations we've had today. We've tackled complex and pressing issues surrounding mental health from an Indigenous perspective, and I hope these discussions have sparked new ideas and deeper understanding in all of us. But remember, today is just the beginning. The insights we've gained and the stories we've heard shouldn't stay within these walls. It's now our responsibility to carry this knowledge forward, to continue the conversations, challenge the stigma, and advocate for better mental health support in our communities. I'd like to extend my deepest gratitude to our keynote speakers, panelists, and every participant who has contributed to today's success. And special thanks to SZABIST University and Dr. Khalda for making this event possible. Let's leave today with the determination to not only talk about mental health, but to act on it. Together, we can make a difference. Thank you, and I look forward to the impact we will all make moving forward. Lastly, I would request our Dean of Social Sciences, Dr. Ras, to please come on the stage so we can present the certificates to our esteemed researchers. Usma Hanif. Do we have Usma Hanif here? Bushra Iqbal. Harsha Rathore. Noreen Jaffrey. Harsha Rathore. Nurul N.
Dr. Shehzad. Hafsa Riaz. Tuba Farooqi. Shiba Farhan. Nazish Anwar. Amna Abdul Ghafoor. And Dr. Noreen Beg. Any other presenter who is left, please raise your hand. Hafsa Khan. Okay, Hafsa Khan, can you please come on the stage? We would now also like to give certificates to the organizers of this conference, starting off with Laibal Jazz. Hajra Jamali. Amna Saha. Hiba Nasir. Sahar Sikandar. Sahar Sikandar. Rania Sheikh. Manal Shujat. Usman Ahmed. And lastly, we have Malaika Naeem. Thank you so much, everyone, and especially Dr. Alam and Dr. Riaz and Dr. Khalda. Thank you very much on behalf of our department. We are grateful to you
You people spent your time, and then ultimately you presented a good paper. And grateful to Dr. Khalda for arranging this conference, and hope to see you soon again for this purpose. Thank you very much. Thank you.